After the known stoichiometric defect, today we will study the impurity defects. Impurity. Impurity means the introduction of the foreign particle. It is a defect which arises due to the foreign atoms present at the lattice site in place of the host atom. सबसे पहले तो हमें ये पता होना जरूरी है कि फॉरेन एटम्स का मीनिंग क्या है. होस्ट एटम आर द पार्टिकल विच मेक्स द क्रिस्टल. For example, crystal is made up of Na positive and Cl negative. Na positive, Cl negative. If we introduce, suppose, strontium ion by replacing the sodium ions, then this is the particle of some other element than the element of which ions are present in the crystal. So this is the impurity defect. When we introduce the impurity, this process is called as a doping. जब हम कोई इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसी भी क्रिस्टल में, ये आयनिक भी हो सकता है, ये कोवेलेंट क्रिस्टल भी हो सकता है, then this process is called doping. So how can we define the doping? Doping is the process of adding impurities to a crystalline substance which change its property is called doping. Now we can introduce impurity defect in the ionic solid as well as in the covalent solid. How can we introduce the impurity defect in the ionic solid? We will discuss it with the help of example. For example, we are considering the crystal of NaCl which is made up of sodium ions and the chlorine ion. When molten NaCl, it is heated with strontium chloride. Then in strontium chloride, which ion is produced? Sr2 positive ion. Sr2 पॉजिटिव आयन 2Na पॉजिटिव को रिप्लेस कर देगा. इट हैज़ 2 पॉजिटिव चार्ज. 2Na have 2 positive charge collectively. One sodium atom has unipositive charge. So 2Na positive will be replaced by the 1 Sr2 positive ion. As a result, one position will be occupied by the Sr2 positive ion and one vacancy is created. So, if we are doping NaCl with strontium chloride, in that case, on introduction of one molecule of strontium chloride, one vacancy is created because one Sr2 positive ion will replace 2 Na positive ion. Similarly, impurity defect in AgCl can be introduced by heating it with cadmium chloride. Similarly, cadmium is also dipositive ion. When one cadmium ion is introduced by replacing 2 Ag positive ion from 2 positions, what happens? One impurity is introduced and one vacancy is introduced. Now we are introducing impurity defect in the covalent solids. Impurity defect in covalent solid changes its property, make them semiconductor. Most common example is the silicon and the germanium. जब हम impurity defect इनमें introduce करते हैं, they changes into semiconductor. These are the group 14 element. हम इनमें जब डॉपिंग करते हैं या तो इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट से करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम से करते हैं. यूजुअली इनमें हम डॉपिंग या तो ग्रुप 13 एलिमेंट से करते हैं या फिर ग्रुप 14 एलिमेंट से करते हैं, ग्रुप 15 एलिमेंट से करते हैं. व्हेन द डॉपिंग इज डन विद ग्रुप 15 एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है क्योंकि इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4. इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5. 1 extra electron they have. These are the electron rich elements as compared to the group 14 elements. Then semiconductor produced are called as the n-type semiconductors. N-type semiconductors. With group 13 elements, p-type semiconductors are obtained. Let us discuss that in detail. If the silicon or germanium we are considering, they have 4 electrons in their valence shell. So they form 4 covalent bond with the adjacent silicon atom. Actually this structure is 3D structure which we are showing in the 2D only. Like this. And each bond, it is formed by the 2 electrons.
by the sharing of electron. These are the covalent bond. Suppose from one position we are replacing silicon by group 15 element like phosphorus or arsenic. In that case, we are replacing it with phosphorus. Phosphorus has 5 electrons in its valence shell. 1, 2, 3 and 4. Fifth electron, it remains free. Fifth electron क्या रहेगा? Free रहेगा. When electric field is applied across it, electric field means positive and negative plates will be there. So, but obvious, this free electron will move towards the positive plate. It will move towards the positive electrode. ये positive electrode की तरफ move करेगा क्योंकि इसमें negative charge का movement हो रहा है. That is why this semiconductor is called as the N-type semiconductor. Let us consider the P-type semiconductor where the group 14 element, that is silicon and germanium, they are doped with group 13 elements. For example, boron, aluminium and gallium. Let us consider silicon atom at some position is replaced by group 13 element. Here I am leaving some space जहाँ पर हम group 13 element introduce करेंगे. Here suppose we are introducing aluminium. Aluminium has only 3 electrons in its valence shell. इसका atomic number क्या है? 13 है. 283. It has only 3 electrons in its valence shell. So 1 electron here, second electron here and third electron here. For the fourth electron, a vacant site is created. Vacant electron site is created, which is called as hole. When it is kept in the electric field. This is the positive plate, this is the negative plate. Electron will move towards the positive plate. So, electron will shift like this. Hole will come here. Electron will come towards this side. Hole will come here. So, we will see that electrons are moving to take the hole. Electron will move towards the positive plate. Electron will move from this side. Electron will move to this side towards the positive plate and hole will move towards, electron will come here, hole will move towards the negative plate. So we consider that it is moving towards the negative plate like positive charge is moving towards the negative plate. So it is considered as P-type. P means positive. This is called P-type semiconductor. So these are the impurity defects in the ionic solids and the covalent solids. Let us take one example. This is the NCERT question. If NaCl is doped with 10 raised to power minus 3 mole% strontium chloride, what is the concentration of cation vacancies? अभी हमने पढ़ा है जितने Sr2 पॉजिटिव आयन आएंगे उतनी ही वैकेंसीज भी आएंगी. दैट मीन्स अगर हम स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड का नंबर निकाल लेते हैं तो उतनी ही कंसंट्रेशन किसकी होगी? केटायन वैकेंसीज की. जस्ट सी 10 रेज टू पावर माइनस 3 मोल% का क्या मीनिंग है? परसेंटेज का मीनिंग होता है आउट ऑफ 100. मोल% का मतलब इन टर्म्स ऑफ मोल, आउट ऑफ 100 मोल्स, आउट ऑफ 100 मोल. इसका मीनिंग है 10 रेज टू पावर माइनस 3 मोल स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड को इंट्रोड्यूस किया गया है किसके अंदर? 100 मोल ऑफ NaCl. 100 मोल ऑफ NaCl. इफ यू वांट टू कैलकुलेट कि 1 मोल ऑफ NaCl में कितना इंट्रोड्यूस किया गया है, 1 मोल ऑफ NaCl में 10 रेज टू पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 100 मोल स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड को इंट्रोड्यूस किया गया है. 10 रेज टू पावर माइनस 3 मोल स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड को इंट्रोड्यूस किया गया है इन 1 मोल ऑफ NaCl. 1 मोल ऑफ NaCl में अगर हम स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड का नंबर निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? इसे एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे. बिकॉज वी नो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड. 10 raised to power minus 5 into 6.02 into 10 raised to power 23 molecules of strontium chloride are introduced in 1 mole of NaCl. So if we calculate it, it will come 6.02 into 10 raised to power 18 strontium chloride in 1 mole of NaCl.
आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जितने स्ट्रॉन्शियम आयन आएंगे उतनी ही आपकी वैकेंसीज आएंगी. सो वी कैन से 6.02 into 10 raised to power 18 cation vacancies are present. Cation vacancies are present per mole of NaCl. Per mole of NaCl. Now we are discussing one more question. Analysis shows that a metal oxide has the empirical formula of M.9601. Calculate the percentage of M2 positive and M3 positive ion in this crystal. कौन सा डिफेक्ट है बेटा ये? दिस इज द मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट, जिसमें 2 पॉजिटिव आयन के साथ क्या है, 3 पॉजिटिव आयन भी है. एग्जाम्पल हमने आयरन का दिया था आपको लास्ट लेक्चर में. M.9601, इसका मतलब इन दोनों की रेशो अगर हम होल नंबर में लेते हैं 96:100 है. ऑक्सीजन अगर 100 एटम्स हैं तो M के कितने हैं, 96. हमें पता है दिस इज द न्यूट्रल चार्ज. दैट मीन्स जितना मैग्नीट्यूड नेगेटिव चार्ज का होगा उतना ही मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज का होगा. वी नो M2 टाइप के आयन से मिलकर बना हुआ है. एक M2 पॉजिटिव आयन है और एक M3 पॉजिटिव आयन है, जबकि ऑक्सीजन केवल O2 नेगेटिव आयन से मिलकर बना हुआ है. एक ऑक्सीजन आटम पर कितना नेगेटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव. तो 100 ऑक्सीजन आटम्स पर कितना नेगेटिव चार्ज हो गया, 200 हो गया. अब हमारे पास टोटल M का नंबर 96 है. अगर हम ये मान ले 2 पॉजिटिव आयन X हैं तो इनका नंबर कितना हो गया, 96 माइनस X. अब टोटल पॉजिटिव चार्ज एक एटम पर 2 पॉजिटिव है तो X एटम पर कितना हो गया, 2X. सिमिलरली M3 पॉजिटिव आयन पर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, 3 into 96 minus X. As we know that magnitude of total positive charge is equal to the magnitude of negative charge. So this plus this should be equal to 100. I am not talking about the sign, I am just talking about the magnitude. 2X plus 396 minus X is equal to 200. Now we can solve it. 2x plus 3 into 96, we have 288 minus 3x is equal to 200. This is minus x plus 288 is equal to 200. From here x is equal to 88. Now M2 positive ion, they are 88 in number, and M3 positive ion, X क्या था, M2 positive ion का नंबर था, M3 positive ion का नंबर हो गया 96 minus 88, that is 8. So M2 positive ion की जब हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ M2 positive ion डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द मेटल into 100. This is the way you can do the calculation. Similarly, percentage of this, either by calculating it you can subtract it from the 100, or you can calculate it like this, 8/96 into 100. Thank you students. If you have any other query, you can please send me in the comments. Please like and share.